Can I start, Prabhu? Yes, Mataji. Okay. यदि गौर न है तो तापे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो तापे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो तापे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो तापे की है तो के माने दरिता दे। राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगते जानत के। राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगते जानत के। यदि गौर न है तो तापे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो तापे की है तो के माने दरिता दे। के माने दरिता दे। मधुर वृंदा दीपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा। मधुर वृंदा दीपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा। व्रजायुवती पवेर पकती शकति हैतका। व्रजायुवती पवेर पकती शकति हैतका। यदि गौर है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। ओ के माने दरिता दे। के माने दरिता दे। गाओ गाओ पूना गौरंगेर कोना सरल है क्या मान। गाओ गाओ पूना गौरंगेर कोना सरल है क्या मान। ए पावसाका हे मान दयाला न देखिए कचा। हे बाबा साकारे हे मन
गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानता के। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानता के। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। ओ के माने दरिता दे। के माने दरिता दे। गौरंग बलिया नगेनु गलिया के माने दरिनु दे। गौरंग बलिया नगेनु गलिया के माने दरिनु दे। देवासुरिया पाषाण दिया के माने गडिया छे। देवासुरिया पाषाण दिया के माने गडिया छे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानता के। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानता के। यदि गौर न है तो गौर न है तो गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। यदि गौर न है तो ताबे की है तो के माने दरिता दे। ओ के माने दरिता दे। के माने दरिता दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yadi gaur na hai to tabe ki hai to ke mane darita de. Translation: If Lord Gaura had not appeared as the Yuga Avatara in this age of Kali, then what would have become of us? How could we have tolerated the living? Who in this universe would have ever learned about the topmost living limits of loving mellows that comprised of the glory of Shri Radha? Who would have had the power to render ecstatic devotional service that follows in the footsteps of the damsels of Braja? Indeed, the clever expertise of the Raja Gopis is a prerequisite for entering the supremely sweet forest of Vrinda Devi. Oh, please sing again and again the glorious qualities of Lord Gauranga. Just try to keep your heart simple. Not even one person within this ocean of nescience has ever seen such a magnanimous personality as he. Even though I chant the holy name of Lord Gauranga, somehow I still have not melted in ecstasy. How then have I maintained the burden of this body? How has the Creator fashioned this body with a stone in place of Vasudeva Gosha's heart? Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर भजन गाया और उतना ही सुंदर कीर्तन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ इस ग्रेस रसिकानंद प्रभु जी को कि आज के जो प्रवचन करता है उनका स्वागत करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मधुर प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु। और थैंक यू भक्तिन कमला, आपका बहुत मधुर गान के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवा कार्यक्रम में जुड़ा हुए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस होलीनेस कविचंद्र स्वामी महाराज की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे साथ इस होलीनेस कविचंद्र स्वामी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शिष्य हैं। आज महाराज 10वां स्कंद में 69th चैप्टर में श्लोका नंबर 23 से लेकर 23 तक हमको प्रवचन करेंगे। महाराज के बारे में हम सबको परिचय हैं, इसलिए महाराज आगे होगा तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हरे कृष्णा महाराज। Hare Bol. What's the verse today? 23 Maharaj, 23 to 26. Maharaj, please accept our humble obeisances. I will not take much time for the introduction because all of us know about you very well. सभी भक्त महाराज का परिचय तो ऑलरेडी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर महाराज को आवाहन करूंगा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़कर आइए आप सब मिलकर एक बार
हरे कृष्ण महामंत्र जप करके महाराज को आवाहन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम Rama Rama Hare Hare. Maharaj, today His Grace Hemrup Gaur Prabhu will do translation. Maharaj, we will welcome him also. Hare Krishna, Maharaj, please bless me. Hare Krishna, Maharaj, you can take over. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chikara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastaya Namahat. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gora Vani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane. Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhakti Da Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate. Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namah. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane. Namo Gaur Kishoraya Satchit Varagya Murtaye Vipralambar Vasambodhe Padambujaya Te Namah. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate. Gaura Virbhavi Bhume Stram Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushe Nama. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Thank you all for inviting me. It's an honor. And please pray that Krishna will speak through me, so there's something that will inspire us all to be very serious, to surrender our mind, body, and words to the mission of Lord Chaitanya as given to us by Srila Prabhupada. महाराज कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद देख रहा हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी कहूँ तो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, और मैं अपने मन, बुद्धि और वाणी से जो भी कहूँ श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। हरे कृष्ण। Text number 23, chapter 69, 10th canto, Srimad Bhagavatam. आज हम स्कंद 10वां स्कंद 69 चैप्टर और श्लोका नंबर 23। Narad Muni visits Lord Krishna's palaces in Dwarka. तो हम सब जो है भगवान श्री कृष्ण के जो महल है उनकी लीलाएं के बारे में बताएंगे। Tatrapyachasta Govindam Lalayantam Sutan Shisan Taton Yasmin Grihe Pashyan Majjanaya Katodyamam. This time Naradaji saw that Lord Krishna was engaged in an affectionate father petting his small children. From there he entered another palace and saw Krishna preparing to take a bath. Purport. This translation is from Srila Prabhupada's book, Krishna, Supreme Personality of Godhead. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that in virtually all the palaces Narada visited, Lord Krishna worshipped and honored him. Do we have Hindi or no?
इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को वात्सल्य प्रीति की तरह दुल्हारे रहे हैं। वहां से वे अन्य महल में गए और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। Yes. So Krishna was living as an ideal householder, and even a king is honoring the great saintly people. तो हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण एक गृहस्थ की जीवन बिता रहे हैं और कैसे ब्राह्मणों का सेवा कर रहे हैं। Of course, everybody would honor Narada. और ये सामान्य बात है कि सब लोग जो है नारद जी का सम्मान करते हैं। He could go anywhere he wants. और उनको जहाँ चाहना है वो जा सकते हैं। So he would sometimes go to Ravana, he would go to Hiranyakashipu, and they would honor him. तो वो कभी रावण के पास भी जाते थे, हिरण्यकशिपु के पास जाते थे, तो वो भी उनका आदर सम्मान करते थे। But I think their honoring was different. They were afraid, of offending him because he would, the reaction would be so heavy. Krishna was actually honoring him, because he's such a great personality. तो जो रावण और हिरण्यकशिपु उनका आदर सम्मान करते थे, तो उनका भावना अलग थी। वो डर से करते थे कहीं कहीं उनको कुछ गलती ना हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनका जो भाव था वो अलग था। उनका सम्मान देने का भाव था। So we also worship Krishna. In America, they teach, some Christians teach, you have to be afraid of God. God is punishing. तो पाश्चात्य देश अमेरिका में वहाँ पे ऐसे सिखाया जाता है कि हमें भगवान से डरना चाहिए और उनसे डर के रहना चाहिए, क्योंकि वो सजा देते हैं। सॉरी, No, Krishna is your friend. लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कृष्ण जो है हमारे मित्र हैं। Still, we don't want to offend Krishna and offend devotees, but it should be out of love that we just treat everybody nice. लेकिन क्योंकि परंतु वो हमारे मित्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अपमान करें और बाकी संतों का भी अपमान करें। Yuvanam cha vitanagam yajantam panchabir mukai bojayantam tvijan koapi bhujanam abhisheshitam. In one place, the Lord was offering oblations unto the sacrificial fires. In another, worshipping through the 5 Mahayagyas. In another, feeding brahmanas. And in yet another, eating the remnants of food left by the brahmana. Yes, translation please. एक स्थान पर भगवान यज्ञ अग्नियों से आहुतियां डाल रहे थे, दूसरे में 5 महायज्ञों द्वारा पूजा कर रहे थे। अन्यत्र वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो कहीं पर ब्राह्मणों के द्वारा छोड़े गए भोजन को खा रहे थे। Purport: the 5 Mahayagyas, or great sacrifices, are defined as follows: Pato, Homas, Chatihinam, Suparya, Tarpanam, Bali. Reciting the Vedas, offering oblations unto the sacrificial fire, waiting on guests, making offerings to the forefathers, and worshipping a share of one's own food, offering a share of one's own food to living entities in general. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। 5 महायज्ञों की परिभाषा इस प्रकार है: पाठो, हमेशा, चतुर्थियों, संपर्य, तात्पर्य, बलिह। वेद पाठ, यज्ञ में आहुति डालना, अतिथियों की सेवा, पूर्वजों को बलि देना तथा सामान्य जीवों को अपने भोजन में से एक भाग देना। Any of you do all those things? Maharaj, you can carry on with the lecture. It's your wish. Yeah, we recite the Vedas. We're doing that now. We offer fire sacrifice. Sometimes we chant the holy name, which is the modern way of doing it. Everybody's very good at taking care of guests and honoring the forefathers. Giving a share of one's food to living entities in general. People will put out grains
We see people, they put out food for the stray cats and dogs. तो महाराज कह रहे हैं कहीं पे हम यज्ञ का सैक्रिफाइस करते हैं और कहीं पे हम गृहस्थों को कमिट करते, लेकिन कहीं हमें ब्राह्मणों को सेवन करना चाहिए। लेकिन आज हम ये भी देखते हैं कि लोग कुत्ते बिल्लियों को भी भोजन करते हैं। One Brijbasi, she said her parents, they never eat until they feed one cow, you know, and the same cow comes every day to their house, and they give her 2 chapatis, and then they will eat. तो महाराज बता रहे हैं, एक ब्रजवासी में एक महिला थी जो वो कहती थी कि उनके जो माता पिता थे वो खाते नहीं थे, तो एक गैया आती थी तो वो उनको रोज देती थी और गैया रोज उनके घर पे आके वो खाना खाती थी। Srila Prabhupada comments as follows on these sacrifices. In another palace, Krishna was found performing the Pancha Yagya sacrifice, which is compulsory for householders. This yagya is also known as Pancha Suna. Knowingly or unknowingly, everyone, specifically the householder, is committing 5 kinds of sinful activities. When we receive water from a water pitcher, we kill many germs that are in it. Similarly, when we use a grinding machine to make foodstuff, we kill many germs. When sweeping the floor or igniting a fire, we kill many germs. When we walk on the street, we kill many ants and other insects. Consciously or unconsciously, in all our different activities, we are killing. Therefore, it is incumbent upon every householder to perform the Panchashuna sacrifice to rid himself of the reactions of such sinful activities. श्री प्रभुपाद ने इन विज्ञानों को के बारे में निलंबित की है। अन्य महल में श्री कृष्ण गृहस्थों के लिए आवश्यक पंचयज्ञ नामक यज्ञ करते हुए पाए गए। इस यज्ञ के पंचाशुन के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से गृहस्थ पंचकार के पंचकर्णों में करता है। जब हम छड़े से जल लेते हैं तो हमें उसमें रहने वाले अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। उसी तरह जब हम चक्की चलाते हैं अथवा भोजन करते हैं तो हमें अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। झाड़ू लगाते समय अथवा आग जलाते समय भी हम अनेक कीटाणुओं को वध करते हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम अनेक चींटियों तथा अन्य कीड़ों को मकोड़ों को वध करते हैं। Krishna did all those things, but fortunately for us, simply by chanting the Maha Mantra, we can cover everything. लेकिन ये सब क्रियाएं जो कृष्ण करते हैं, लेकिन हमारे लिए हम भाग्यवान हैं कि हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र से अपनी पाप मिटा सकते हैं। But we have quite a few people remembering Prabhupada. He would see some insect on the floor of his room. जब भी हम देखते थे कि श्री प्रभुपाद जी के कमरे में अगर कोई कीड़े मकोड़े रहते थे, that looked weak. Sorry, Maharaj. And he told his servant, put him outside where they can get some food. तो श्री प्रभुपाद जी अपने सेवकों को कहते थे कि इनको बाहर रखिए, वहां पे वो ठीक रहें। They can't find their own way out. और वो अपने आप को संभाल लेंगे। But you know, everything we do, we're killing something. हम कुछ भी करते हैं तो कहाँ न कहाँ किसी को मारते हैं। Like I remember in America, sometimes when we drove in the north where I lived, it was a lot of forest, and there were so many insects in the air. The windshield would just be full of big bugs just splattered on the glass. You know. तो महाराज कह रहे हैं उत्तर अमेरिका में जब वो जंगल की तरफ रहते थे तो उनके गाड़ियों के ग्लास पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमा हो जाते थे। So chant the holy name. That's the perfect yagya. तो जो महामंत्र का जप करना ही एक परफेक्ट यज्ञ है। Srila Vishwanath Chakravarti, in his commentary on this verse, again points out that all the different times of the day were occurring simultaneously in Lord Krishna's palaces. Thus Narada saw a sacrifice, the morning ritual, and about the same time he saw Krishna feeding the Brahmins and accepting remnants
a noontime ritual. तो वो इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुनः इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण के महलों में दिन को विभिन्न समय घटित हो रहे थे। नारद ने अग्नि यज्ञ प्रतिकाल कालीन अनुष्य करताते हुए तथा लगभग उसी समय भगवान कृष्ण को ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा अनेक इच्छुति के ग्रहण करते हुए देखा, जो दोपहर के कार्य है। You want to read one more? You said to 25? Maharaj, up to 27, Maharaj, 5 slokas. Wow. Kwapi sanjam upasinam chapantam brahmavagitam ekatra chasi charmabhyam charantamasi vartmasu. Somewhere Lord Krishna was observing the rituals for worship at sunset by refraining from speech and quietly chanting the Gayatri mantra. And elsewhere he was moving about with sword and shield in areas set aside for sword practice. कहीं पर भगवान मौन कर रहे थे तथा मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए संध्याकालीन पूजा के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। तो कुछ स्थानों पर जो तलवार के अभ्यास के लिए निश्चित थे, वे तलवार ढाल चला रहे थे। According to Srila Vishwanath Chakravarti, the word Sanjam Upasinam indicates sunset rituals, whereas the words Asi Charmabhyam Charantam refer to sword practice, which takes place at dawn. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार संध्याम उपासनम शब्द संध्याकालीन अनुष्ठान के सूचक हैं, जब असीम चानुमूर्तिवदनम तलवार चलाने के अभ्यास में सूचक है, जिससे अधिक सुबह किया जाता है। So Krishna is not subject to material conditions. तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भौतिक जो है वातावरण के संयुक्त नहीं है। He was adjusting all these things so that Narada could see all of this. वो इस तरह से एडजस्ट कर रहे थे जैसे कि नारद मुनि सब देख सके। Not only that, he was doing different things in each palace, but different times a day, even just the next, he's just going from one place to the next, and it would be a different time of day. और भगवान श्री कृष्ण ना ही केवल अलग अलग गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन अलग अलग समय में भी कर रहे थे। जैसे कि नारद मुनि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तब अलग अलग समय भी हो जाता था और अलग अलग गतिविधियां भी हो जाती थी। Ashvaya jagai ratai kwapi vicharantam galagajam kvachich chayanam puryam ke stuyamanam shavandibi. In one place, Lord Gadagara was riding on horses, elephants, and chariots. In another place, he was resting on his bed while bards recited his glory. एक स्थान पर भगवान गजराज घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवारी कर रहे थे और दूसरे स्थान पर वे अपने पलंग पर लेटे तथा भाट उनकी महिमा का गायन कर रहे थे। Srila Vishwanath Chakravarti points out that riding on horses and elephants is a noon activity, whereas one lies down during the later part of the day or the night. श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि घोड़ों तथा हाथियों पर सवारी करना दोपहर का कार्य है, जबकि लेटना रात के दूसरे पहर का। Mantrayantam chakasmimschin mantribis shodavadibi jalakrida ritam kwapi vara nukyabi balavitam.
Somewhere he was consulting with royal ministers like Uddhava, and somewhere else he was enjoying in the water, surrounded by many society girls and other young women. कहीं वे उद्धव तथा राजमंत्रियों के सलाह मशवरे कर रहे थे, तो कहीं पर वे अनेक नृत्यांगनों के तथा तरुणियों के से घिरे जल क्रीड़ा करते थे. According to Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna met with his counselors around dusk and enjoyed water sports in the afternoon. यह भावरत श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान कृष्ण अपने मंत्रियों से संध्या के लगभग मिले और जल क्रीड़ा की लीला दोपहर के बाद हुई. Kuchachit dvija mukyebhyo dadatam ga swalankritaha itihasa puranani shinratam mangalani cha. Somewhere he was giving well-decorated cows to exalted brahmanas, and elsewhere he was listening to the auspicious narration of epic Puranas and histories. कहीं वे उत्तम ब्राह्मणों को भली भांति अंकुल गांवों दान दे रहे थे और कहीं वे महाकाय के इतिहासों तथा पुराणों को शुभ वर्णित कर सुन रहे थे. Srila Vishwanath Chakravarti informs us that giving cows in charity occurs in the morning, while hearing the histories takes place in the afternoon. विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते थे कि गांवों में दान प्रातः काल दिया जाता है, जबकि इतिहास श्रवण उपग्रह के संपन्न होता है. Forgive me, is that the end or you want one more? Hare Krishna, up to 27 only, Maharaj. Okay, yeah, I went too far then. Okay, so of course Krishna is exhibiting his opulence. तो कृष्ण जो है अपने ऐश्वर्यों को दिखला रहे हैं. Prabhupada says that, I don't know if there's anybody anymore, but some yogis, they can be more than one place at the same time. प्रभुपाद कहते हैं ऐसे कुछ योगीश हैं जो एक से ज्यादा होकर एक ही दूसरी जगह पे भी मौजूद हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं. But doing exactly the same thing. लेकिन वो जो है एक ही क्रिया करते थे अगर दो जगह पे भी मौजूद हो. So even, not so long ago, there were stories of people saying two different people had the guru eating dinner at their house at the same time. तो दो लोग एक ही जगह पे काम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हमने सुना है. Or nowadays by technology, I can be sitting here and so many can see me. तो लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, सब जन मुझे देख सकते हैं. Some big person can be on television with millions of people watching. तो टीवी पे भी देख सकते हैं, तो हजारों लोग, लाखों लोग देख सकते हैं. There's one Christian preacher in America, 7 million people watching on television. एक जन जब प्रचार कर रहे थे तो 70 लाख लोग उसे देख रहे हैं. But it's exactly the same. So the yogis, they can't do that many, but whatever, they can be 2, 3, 4, up to 8, but same, exactly the same. They can't be like Krishna here. Every palace is not only different activity, it's a different time of day. तो योगी जन जो है अपने आप को 8 तक अपने आप को वो एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन वो 8 एक ही क्रिया कर सकते हैं. लेकिन पर यहाँ पे हमने इस लीला में देखा कि कृष्ण अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं और अलग अलग समय पर भी कर रहे हैं. So even Narada Muni, who knows so much about Vishnu and Krishna, he is bewildered. तो नारद मुनि जो स्वयं इतना कुछ जानते थे, इतना कुछ ज्ञात करते थे, लेकिन वो स्वयं जो है वो भ्रमित हो गए.
So now Krishna is expanding himself all over the world in deity form. सॉरी महाराज, लास्ट। Many different forms. हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक ही समय पर अलग अलग बहुत सारे रूप में आते हैं। Of course, he's really in different time zones. So one place he's having Mangalarti, one place he's sleeping, one place he's listening to the class, one place he's eating. तो अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कहाँ मंगला आरती कर रहे हैं, कहाँ भोजन कर रहे हैं, कहाँ क्लास सुन रहे हैं। But this is opulence. There's a story in the Krishna book too. तो यही ऐश्वर्य हम देख रहे हैं कृष्ण बुक में भी है। Krishna was traveling with an entourage of sages. तो भगवान श्री कृष्ण संतों के साथ कहीं जा रहे थे। And there were two in this one city. There were two very great devotees. और उसमें से दो बहुत ही ऊंचे तरीके के भक्तगण थे। One was the king. एक राजा था। The other was a very poor Brahmin. और एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण। So they both invited Krishna to come to their house. और दोनों ने भगवान को अपने घर पे आमंत्रित किया। So Krishna agreed. कृष्ण मान गए। So not only Krishna, but all the sages that were with him, everybody went to both places at the same time. तो खाली भगवान कृष्ण नहीं, उनके साथ जितने भी संत थे, दोनों एक ही समय पर दोनों जगह पे थे। And the king, of course, offered so much opulence, sitting places and food and servants. तो राजा ने, ये सामान्य बात है कि बहुत सारे ऐश्वर्यों के साथ उनका स्वागत किया, उनको खाना दिया, भोजन दिया, फ्रूट दिया। And Krishna and everybody, they enjoyed equally at both those places. और भगवान कृष्ण और उनके साथ सारे जो संत हैं, दोनों ने दोनों जगह पर आनंद लिया। Having exchanges of love. Although the Brahmana, he had nothing to offer. He put some wooden boards down they could sit on, and he just could give them a little water. और दोनों पे जगह पे प्रेम भाव का परस्परम हुआ। हालांकि ब्राह्मण के घर पे उनको खाली एक थोड़ा सा जल मिला। But Krishna was equally satisfied. लेकिन भगवान जो है दोनों जगहों पर सामान्य तरह से संतुष्ट हुए। Because it's attitude that counts. और जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो तरीका है, वो मान्य रखता है। Krishna eats the devotion of the offering. भगवान जो है भक्ति खाते हैं। Prabhupada, sometimes we see pictures of Prabhupada with a huge feast in front of him. Sorry, Maharaj, picture with? We see pictures of Srila Prabhupada and there's a really huge feast, so many preparations. तो हम देखते हैं कि कितने सारे फोटो देखते हैं जहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सारे व्यंजन के साथ बैठे हैं। There's one movie of that. So Prabhupada, but he didn't eat very much of it. तो लेकिन श्रील प्रभुपाद इतना नहीं खाते। Shruti Kirti said Prabhupada could eat just by looking at it. तो श्रुति कीर्ति प्रभु कहते हैं प्रभुपाद केवल देखने से खा लेते। So in the movie we see him meditating very deeply, and he's looking at each prep, and sometimes he's touching them, but very rare is he tasting with his tongue. तो हमने एक मूवी में देखा कि श्रील प्रभुपाद जो है सारे जो उनको सामने जो रखे हुए थे उनको देखते थे और उनको कभी-कभी हाथ भी लगाते थे, लेकिन वो खाते नहीं थे साथ। But he knew he was checking the bhakti. लेकिन उनको पता था कि श्रील प्रभुपाद जो है वो भक्ति को चेक कर रहे हैं। When he went to Australia, he had a prasad and there were puris. तो जब वो ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद जो उन्होंने प्रसादम में पूरी खाई। And Prabhupada asked him, who made these puris? तो प्रभुपाद ने पूछा किसने बनाई है ये पूरियां? And they said, Kurma Prabhu, you know, Kurma is our famous cook. तो उन्होंने बोला, कुर्म प्रभु ने बोला, और हम सब ये जानते हैं कि कुर्म प्रभु कितने अच्छे कुक हैं। Prabhupada said, he has good consciousness.
प्रभुपाद जी ने बोला उनके जो मनोभाव है बहुत अच्छी है। Tejas Prabhu told me, Prabhupada told him that cooking is 90% consciousness. तेजस प्रभु ने उनको कहा कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब हम खाना बनाते हैं तो 90% जो है हमारा भाव है And 10% recipe. और बाकी के जो 10% है वो बाकी है। And that's why they say your mother's cooking is the best. तो हम कहते हैं हमारी माँ जो है अच्छा खाना बनाती है। Or your wife, it should be. और हम कभी-कभी हम धर्म पत्नी के बारे में बोलते हैं। Because they're cooking with love. जो हम खाना बनाते हैं वो प्रेम से बनाते हैं। So devotees cooking for Krishna, it's with love. Whatever we do should be with love. तो हम सब कृष्ण भावना में भक्तों को ये मालूम होना चाहिए कि हम जब खाना बनाते हैं भगवान कृष्ण के लिए बनाते हैं Without expecting anything in return. और बिना कुछ आदान प्रदान किए अहितों की भाव से। So we see that with faith and devotion, that's the key. Sometimes people say, well, I'm chanting, but I'm not getting results. तो हमें भरोसा रखना है और प्रेम रखना है, लेकिन कभी-कभी लोग कहते हैं कि हम जपमाला करते हैं तो लेकिन इतना ध्यान नहीं लगता। If we're fortunate, we'll think, well, am I chanting enough? Am I chanting all the time? Am I chanting, for Krishna's pleasure? Am I doing everything else? Not, and because the offenses we make are not always while we're chanting. There are other times we offend devotees. While we're doing japa, or kirtan, we're not so likely to offend devotees, but other times we might. तो हमें जो भी जपमाला करना है बिना किसी अपराध के करना है। हम देखते हैं कीर्तन में भजन में सब जपमाला करते हैं। So we have to practice, and that's why we read these Bhagavatam and we see how Krishna is such a personality. हमें जो है having exchange with Narada, showing him. हमें जो है वो ठीक से अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए नित्यम भागवत सेवा में हमने देखा कि भगवान के ऐश्वर्य कितने हैं और नारद जी कैसे उनसे अचंभित। And then we're very fortunate that it's come down to us. और हम बहुत ही भाग्यवान हैं ये सब देख। Like I was saying the other day, ordinary people, they won't believe this. और जैसे कि महाराज कहते, मैंने उन्होंने कहा कि सामान्य लोग इस पे यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। But they believe in so many things. लेकिन वो और भी किसी चीजों पे विश्वास करते हैं। That are more crazy than what the. Sorry, Maharaj? Like the structure of the universe. They made up all these words, synchronicities and dark holes and quarks and many words they made up to explain all these things that they have no idea what it is. लेकिन वो इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड कैसे बनता है वो सब चीज मान लेते हैं। But when we tell about Mahavishnu and all these expansions and Chaturvyuhas, they say that's crazy. There can't be people involved. लेकिन जब हम विष्णु के बारे में कहते हैं और उनको कैसे वो अपने आप को विस्तार होता है, ये सब अगर उनसे बातें करते हैं तो वो ये नहीं मानते। Although in the fiction they go to other planets and there's all kinds of civilizations. लेकिन भाव की तरह वो कुछ मान लेते। But generally they say there's no life. लेकिन वो ये मानते हैं कि ये जीवन नहीं। Because they can't see it. Even if it was there, they couldn't see it. क्योंकि वो देख नहीं पाते। And we can't see so many things. लेकिन हम जो है बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। And then even a modern, they call illusionists now, we used to say magician. They can make things disappear and the crowd can't see it anymore. तो जैसे कि जादूगर जो है शो में दिखाते हैं कि कैसे गुम कर देते हैं चीजों को, वैसे वो मान लेते। One did that with the Empire State Building. He had a group of people and they could see that building, and then he talked and moved his hands in certain ways and bewildered their minds, and then he said, see, it's gone, and they couldn't see it. तो जैसे कि जादूगर अनेक तरह से जादू करते हैं और हमें भ्रमित करते रहते हैं।
It was there. Other people that were not in his group, they could see it. लेकिन वो वहां पे था, लेकिन दूसरे लोग ब्रह्म के कारण वो देख नहीं पाते। Well, they do things like that all the time, big and small. तो ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है। So what to speak how the demigods can bewilder us when we're trying to look at their planets. तो अगर ये कर सकते हैं तो देवी देवता भी क्या क्या हद तक जा सकते हैं जादू। Even the American military, they can build these stealth bombers or something, nobody can see them. तो इन अमेरिका में महाराज कह रहे हैं कि जो मिलिट्री वाले हैं वो भी बहुत सारी चीजें करते हैं। So anyway, Krishna is showing Narada Muni it's out of love. तो कृष्ण जो है नारद मुनि को प्रेम से दिखा रहे हैं, प्रेम की भावना से दिखा रहे हैं। Because Narada Muni is the main preacher in the universe, that's his whole function. क्योंकि नारद मुनि जो है वो पूरे ब्रह्मांड के प्रचारक हैं। Lord Brahma was creating his sons, and they call them mental sons. They just were popping out from his mind. ब्रह्मा जी जो उनके पुत्र हैं वो उनके नाभि से आ रहे हैं। The great rishis, and they all had different functions, and as far as yagyas and teaching and knowledge and stuff. यज्ञ जो यज्ञ और अन्य तरीके से उनको सिखाए। Then it stated that, you know, his discretion, the greater part of his intelligence, he thought there should be one person in the universe who has nothing else to do but preach bhakti, teach bhakti. और पूरे ब्रह्मांड में यदि और पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई है तो अगर भक्ति के बारे में कोई सिखाए। And at first Narada was bewildered. He thought that Brahma must be supreme. तो नारद जी भी भ्रमित हो गए ब्रह्मा का इस काम देख के। Big service. But then he realized, because he saw Lord Brahma doing tapasya, so he asked him, who is greater than you that you have to do this tapasya? तो नारद जी ब्रह्मा के बात कहे, आप इतना तपस्या कर रहे हैं लेकिन आपसे ऊपर या आपसे बेहतर कौन है? And then Brahma taught him the Srimad Bhagavatam. और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सिखाया। Brahma heard 4 slokas from Krishna in the heart. तो ब्रह्मा जी ने केवल 4 श्लोका उनके हृदय में सुने। And then he explained it to Narada in many more slokas. और उनके बाद ब्रह्मा जी ने नारद को और बहुत सारे श्लोक समझाए और बहुत सारे अध्याय भी समझाए। Then he told Narada, you go and expand this and teach it all over. और उन्होंने नारद जी को कहा, अभी आप इनको और विस्तार कीजिए इनका। So he did that. So we have many commentaries. We have Srila Prabhupada's commentary. और नारद जी ने कहा, और इस तरह नारद जी ने वही किया, और हम ये देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी भी कैसे टिप्पणी करते हैं। The devotee was asking me the other day, the Bhagavatam and other planets, and it's the same, sometimes much bigger. तो उन्होंने किससे पूछा कि भागवतम और जो ब्रह्मांड है वो सेम है कि बड़ा है? Because even these little opulences of Krishna are so inconceivable. लेकिन कुछ छोटे, अगर छोटा भी ऐश्वर्य हो तो हमने बहुत कुछ देखा। And even Sheshanaga and Antashesha, when said, chanting the glories of Lord Chaitanya since time immemorial, with millions, thousands of heads, and no one has ever repeated the same thing twice. तो अनंत जो अनंत शेष है वो भी अनंत काल से भगवान की लीलाएं के बारे में गुणगान कर रहे हैं, और अनंत काल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भी लीला जो है वो सेम नहीं। All right, so we can take some questions, comments. महाराज कह रहे हैं कि उसके बाद हम प्रश्न ले सकते हैं। I'll be departing from this wonderful yatra soon. So. Hare Krishna, His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki Jai. Thank you, Maharaj, for your nectarian class. It's really wonderful. Your association with us for the past 2 weeks was really great. And most of the days you blessed us with your wonderful pravachan also. Thank you, Maharaj. Hare Krishna devotees. If you have any questions, kindly unmute and you can ask your questions to Maharaj.
and Maharaj is going to leave today or tomorrow. Maharaj is telling he is very happy, and महाराज बोल रहा है अभी ये दामोदर देश यात्रा बहुत सुंदर है, उन्होंने बहुत यहाँ पर संतुष्ट हुआ करके महाराज बोल रहा है। किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। Hare Krishna. I think there are no questions, Maharaj. Comments? Anyone want to give some realizations? No, Maharaj. Now I request His Grace Jai Govinda Das Prabhu to share with you his realization or any questions from his side. Otherwise, announcement for tomorrow's program. Okay. Hare Krishna, Jai Govinda Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Please accept our Thank you so very much, Maharaj, for your wonderful association. We really enjoyed your nectar, the Bhagavatam classes and Sunday classes. It was really wonderful to have your association. Please keep coming and blessing us, Maharaj. Thank you so very much. And we wish you safe travels, Maharaj. Hare Krishna. Okay. Devotees, we are reading Srila Prabhupada Lilamrut every day morning. So we have completed today. So it's after 2 years we have completed. From tomorrow onwards, we will be reading the teachings of Lord Chaitanya, Chaitanya Shikshamrut. So उसका promo हम लोग play करेंगे. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. Thank you. So we request devotees to contact Aparajita Mataji, Shivendra Prabhu for reading this Chaitanya Shikshamrita. I mean the teachings of Lord Chaitanya and Chaitanya Shikshamrita. हमारा कीर्तन भी हम करते हैं रोज 6:45 से 7 o'clock तक. So who are interested to sing, please be in touch with Lokapalika Mataji. और जो कल जो संडे है, इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे. इट इज कामिका एकादशी और इस शुभ अवसर पर हमारा बीच में होंगे अजितानंद प्रभु. जैसे मैं कल कहा था, yesterday was the ISKCON incorporation day. So इसके बारे में चर्चा करेंगे. And अभी Maharaj is also there. We have another 10 minutes time. We can request Maharaj to speak few words on ISKCON Incorporation Day. Maharaj, can we request you to speak a few words on ISKCON Incorporation Day, Maharaj?
Yeah, Maharaj is not there. I think he's getting ready to travel. Maharaj ka flight hai. I mean, he's leaving in another few minutes. Okay. So yeah, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे. Rasikanand Prabhu, we have 10 more minutes time. Since we have completed today, Yeah. can we play that song Yadi Prabhupada Na Hoito, which is written by His Holiness Jaipataka Swami Maharaj? Yes, Prabhu. Yeah, it's really a very, very wonderful suggestion. Yeah. Can you play that through, or you want me to play? Yeah, Prabhu, that will be better. I am not technically sound. Madhava Prabhu is there, he'll do that. Yeah, Prabhu. Maybe Subhash Prabhu, you can do that. Any one of you, no problem. Vigraha Shiva Arati
चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सारो कानन सुंदर सरल करिया के बुझाइता यदि प्रभुपाद होइतो तबे की होइतो ए जीवन बाहिता किसे शाही प्रतमाने राही के बदित हरिना के दिता मोदेरा पूरी वृंदावन मायापुर मतोधा के दिता मोदेरा पूरी वृंदावन मायापुर मतोधा यदि प्रभुपाद होइतो तबे की होइतो ए जीवन बाहिता किसे परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभु आचारे प्रचारे सदा मधेरे के करिता नियोजना आचारे प्रचारे सदा मधेरे के करिता नियोजना यदि प्रभुपाद होइतो तबे की होइतो ए जीवन बाहिता किसे प्रेम कल्पतारो निताय कोरेरा प्रेम कल्पतारो निताय कोरेरा कृपा कोनो लोभी पारे निरवधि जय पताका हृदये तुम्हारे शरण करे निरवधि जय पताका हृदये तुम्हारे शरण करे यदि प्रभुपाद होइतो तबे की होइतो ए जीवन बाहिता किसे यदि प्रभुपाद होइतो तबे की होइतो ए जीवन बाहिता किसे निताय गौरेरा अपार करुणा खेदित सकल देशे निताय गौरेरा अपार करुणा खेदित सकल देशे यदि प्रभुपाद होइतो तबे की होइतो ए जीवन बाहिता किसे Thank you, sir, Subhash Prabhu. यदि प्रभुपाद न होइतो तबे की होइतो ए जीवन बहिते कैसे किसे यदि प्रभुपाद नहीं हो तो हमारा जीवन हम कैसा बिताता था. This is a wonderful song written by Srinivas Jayapataka Swami Maharaj glorifying Srila Prabhupada. So हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं. It's only because of Prabhupada mercy. If Prabhupada is not there,
then what would have been done? Nothing, right? So if Srila Prabhupada had not come, what would have happened? How could we have passed our lives? Who else would have distributed the unlimited mercy of Lord Nityananda and Gauranga all over the world? Which other compassionate person who would have endeavored to deliver the miscreant, sinful, impersonalistic, and voidist people in the West? Who else would have come to distribute the Harinam to them? Who else would have come forward to transform them into civilized beings? Who else would have taught them how to worship the deity, form of Lord Hari, day and night with Arati, Kirtana, and how to conduct Rath Yatra and other grand festivals? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita contain the essence of the nectarian mellows of the love of Godhead. Who else would have explained these scriptures so clearly and beautifully? Who else would have tolerated all difficulties and distributed Harinama with a pleasant heart? Who would have given us the Dhammas such as Mayapur, Vrindavan, and Jagannath Puri? The teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu constitute the greatest and most auspicious treasure. Who else would have engaged us in constantly preaching, practicing and preaching it? Sri Sri Gaur, Nithai Gaur are desired trees of love of Godhead. Desiring a drop of their mercy, Jayapataka's heart incessantly take shelter of your divine grace. Jai Srila Prabhupada. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki Jai. So here also in this, it's written, like who else would have distributed the Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Shikshamrita? So we have a great opportunity to read, the 7th verse. The teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu constitute the greatest and most auspicious treasure. So, this what exactly the point we are trying to make here. कल से हम लोग ये चैतन्य शिक्षामृता पढ़ने वाला है. So, ये चैतन्य शिक्षामृता में it consists of a greatest treasure. हमारे लिए बहुत precious wealth है. So, सभी भक्तों से निवेदन है सुबह 6:30 बजे जुट जाइए. कल इसका उद्घाटन होगा हमारा प्रिय शिवला प्रभु के द्वारा. तत्पश्चात हम रोज इसको पढ़ते जाएंगे. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. एंड कल हमारा प्रोग्राम है सनमार्क इंटरनेशनल स्कूल में. कार्यक्रम प्रारंभ होगा सुबह 10 बजे, 10:30 बजे. 10:30 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक चलेगा. अच्छा कीर्तन होगा और कथा होगा. और कथा करने के लिए हमारा बीच है मायापुर से हिज ग्रेस अजितानंद प्रभु मायापुर गुरुकुल में टीच करता है. तो एक अच्छा मौका है हम सब लोग. और प्रभु बात करेंगे इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे, मतलब जैसा इस्कॉन का उद्घाटन हुआ और क्या क्या डिफिकल्टी शिला प्रभुपाद ने उठाया और उसके बाद हम लोग ये आगे कैसे बढ़ा. इट इज 56 years हम लोग इस्कॉन का संस्था प्रारंभ होकर. So it's a great opportunity for us to hear from Prabhu tomorrow. So please don't miss this opportunity. और बस का भी उपलब्ध है. बरदुबाई से बस निकलता है. एक बस निकलता है 10 बजे, 10 बजे. So किसी को इसका सुविधा उपलब्ध करना हो तो मधुपति प्रभु से संपर्क कीजिए. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद. और हम लोग अभी आगे जाके प्रार्थना लेते हैं. वी वेलकम सच्चिदानंद प्रभु टू टेक द प्रेयर्स. हरे कृष्णा. धन्यवाद जय गोविंदास प्रभु. आप यदि प्रभुपाद न हुई तो कीर्तन हमको सुनाया और उसका ट्रांसलेशन भी आपको पढ़ा. बहुत अच्छा लगा था. बहुत धन्यवाद प्रभु. और आगे बढ़ते हुए हम आज का प्रोग्राम में आकर स्टेज में है. इसमें हम प्रार्थना करके
विराम करेंगे। प्रार्थना के बहुत मुख्य से सबसे पहले महाराज अब दामोदर देश यात्रा से आगे जा रहा है, कुछ उनका बाकी देश को जाके उधर प्रवचन कर रहा है। महाराज तो यहाँ पर 2 हफ्ता हमारे साथ था। इतना सुंदर रूप से महाराज सुबह सुबह मंगल आरती प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहा था। महाराज खुद उसमें मंगल आरती कीर्तन भी कर रहा था। जो उस प्रोग्राम में ज्वाइन किया उन लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा था। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और महाराज से हम लोगों को इतना आशीर्वाद भी मिली है। ये बहुत सौभाग्य है हमारा। और आगे बढ़ते हुए हम महाराज का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और हमारा प्रसाद सेवा में है मुख्य पात्र लेने वाला चित्त हरिदास प्रभु, उनका अच्छा स्वास्थ्य के लिए और श्रीवल्लभ प्रभु का जननी परिपूर्ण राधा देवी दासी माता जी का और हम एक माता जी यहाँ पर मेधा जानवा माता जी, मेधा जानवा देवीदासी माता जी, थैंक यू प्रभु। ये माता जी भी बहुत उत्साहित से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होते हैं। प्रत्येक रूप से माता जी जब प्रसाद सेवा में और 56 भोग सेवा में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेकर माता जी सेवा करते हैं। उस माता जी को थोड़ा हेल्थ का थोड़ा इश्यू अभी हॉस्पिटल में है। हम सब मिलकर माता जी के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा जय गोविंद दास प्रभु अभी 2 हफ्ता से अकेला इधर प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं और प्रसाद सेवा में भी प्रभु तो अकेला सेवा कर रहा है। इसलिए हम प्रभु को भी श्रील प्रभुपाद का और कृष्ण भगवान से उनका आशीर्वाद और शक्ति मिलने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम को अकेला हैंडल करना भी इतना आसान नहीं है। सो हम सब के लिए अभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नित्यम भागवत सेवा का सभी टीम मेंबर्स को मेरा आभार कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं 1 हफ्ता मेरे लिए इस प्रोग्राम को संचालन करने के लिए अवकाश दिया। इसमें मुझे प्यूरिफिकेशन का चांस मिला, एक सेवा मिली मुझे सभी को, और प्रत्येक रूप से जय गोविंद दास प्रभु मुझे बहुत गाइडेंस दिया था। मैं सबको आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। मुझे बार बार मुझे अवकाश देने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरा तरफ से कुछ त्रुटि हुए तो कृपा करके मुझे माफ करिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। इससे आज का प्रोग्राम विराम करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। प्रभु जय गोविंद प्रभु, आपका परमिशन से विराम करो। हाँ प्रभु, आप बोल रहे थे मैं अकेला संचालन कर रहा हूँ, वो दैट इज नॉट राइट। हाँ, पूरा दामोदर देश है हमारा। वी आर होल्डिंग आवर हैंड्स ईच together and we are running this. It's not that one man show. हरि बोल। ये तो आपका विनम्रता भाव है प्रभु। हरि हरि बोल। जय प्रभु। Thank you प्रभु। You've also done wonderful service Prabhu from last 1 week. We look forward to see you again and again. Thank you very much Prabhu. Thank you for giving wonderful darshan of TOVP in Dubai. Especially in Bangladesh. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। Thank you. प्रणाम। सी यू ऑल टुमारो प्रभु। सब भक्तों कल का प्रोग्राम में आ जाइए। हरे कृष्णा। निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि।